My next guest on today's podcast is Ambreen Nadeem. Ambreen is an author as well as a market research analyst at Euromonitor. Thank you so much, Anis, for having me. It's an honor to be here on your podcast and sharing my expertise and knowledge here with you and with your audience. Her entire life is dedicated towards understanding the aspects of spirituality and how does various aspects, whether it's mindfulness practices, breath work, visualization, and all the spiritual practices can help you achieve things in life. And she has some amazing perspectives, and she talks about the various algorithms which are there around us can really help us change who we are and what we want to achieve in life. Actually, there are certain algorithms going on. The entire world, the universe is governed by certain algorithms, some physical laws, some scientific laws. So if you are really interested to understand what you can achieve in life, what you should be focusing on, and where should be aligning your entire thought process, I would highly recommend you to listen to this podcast. And without much further ado, let me get on with it. Hi, Ambreen. Welcome to Masters Decoded Season 3. Really glad to have you on the show today. Thank you so much, Anis, for having me. It's an honor to be here on your podcast and sharing my expertise and knowledge here with you and with your audience. No, I was, मैं जब भी आपका प्रोफाइल देखा लिंक्डइन पे और मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च करी आपके बारे में, तो मैंने and I looked at it and I said, there is something very interesting what you're doing while you work, I understand, but what you've been doing on a personal side as well, and it was very compelling for me to talk to you. So पहले एक चीज बात करते हैं जो आपके पीछे पड़ी है, एक बुक आपने जो लिखी और जो नंबर 1 बेस्ट सेलर भी हो गई Amazon में within 24 hours. Yes. It's called the algorithms of life, right? Yes. And candidly, this is So this is a very selfish interest, by the way. And you are in psychology also. You have done your graduation in psychology. You've studied psychology, and what you do today and you work in brings in a lot of flavor of psychology. And when I started dabbling my thoughts, okay, about the psychological aspects of life, right? क्योंकि हम इंसान जो भी करते हैं क्यों करते हैं, right? अगर हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, what is it, right? Or behavioral economics, behavioral science is such a big topic these days, but it all stems from that base root of psychology, that's the base. So, I don't want to reveal everything what you've written in the book, but ये algorithm और ये life का, that's a very interesting topic. So can you explain that? Sure. It's basically जो मैंने उस book में लिखा है, the algorithm of life is basically I given the concept of free will, because I'm a psychologist, of course, but I used to read palms also. So I used to be a palmist, and I used to predict future of the people, right? By reading the palms of the people. और होता ये था कि जब मैं लोगों के हाथ देखती थी और मैं जब उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती थी, एंड ऑफ कोर्स वैसे ही होता था जैसा मैंने उनके हाथ में देखा था. अच्छा. तो होता ये था कि मुझे फिर जो है ये जरा बॉदर करता था कि why it happens exactly the same way when I like see them in their palms, right? तो इनके हाथ में क्या है? Do they even have free will, or it's all written in their palms, or it's all written in the destiny? So then I started doing a lot of research, and I started thinking a lot about it. मैंने बहुत सारी fields इसमें पढ़ी. I studied quantum physics, I studied philosophy, literature, psychology. I mean, to find the answer कि क्या वाकई हमारे, do we have any control over our destiny or not? We're just following whatever is given to us. तो फिर मतलब बहुत सारी मेरी रिसर्च के बाद, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के बाद, I came up with the concept कि actually there are certain algorithms going on. The entire world, the universe is governed by certain algorithms, some physical laws, some scientific laws. और अगर हम उन्हीं laws को लेते हुए ही चलते रहेंगे, तो we'll be just responding to these laws, right? It's just like
कि अगर आप कोई भी फायर बर्न करते हैं, so you will feel the heat because it's Right. all the chemical reactions going on and you are bound to feel it because वो chemical reactions होंगे और you will feel it. आपके जो body में भी certain reactions होंगे which make you feel कि there is some heat around you, right? And you will feel the sensation. So these everything is governed by certain physical laws, and the universe is also governed by certain physical laws. अगर हम उसी laws पे चलते रहेंगे तो we will be following whatever is given to us. Mm-hmm. लेकिन अगर हमें अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेना है, so we need to understand that what's going on behind this, what are these algorithms and how we can take charge of destiny. So Sure. that's exactly what I have written in the book, that how you can take charge of the destiny, how you can understand all these algorithms and then use it for your own good. Sure. अभी आपने काफी चीज बोली, एक तो palmistry which is surprised the complete thing out of me, and we'll पहले वो बात करते हैं and then we'll talk about Sure, other sure. things, right? And I would love to know some of these algorithms which you have Sure. written in the book. So when you were doing palmistry, आप कहाँ कर रहे थे? आप जब भी आप कराची में थे जब भी आप कर रहे थे कि अभी आप सऊदी में हो जब भी वहां पे कर रहे हो आप? Where were you doing palmistry? Actually, yeah, basically, मेरा जो background है, like my father was a palmist, my uncle was a great palmist, my actually जो grandfather थे वो भी palmist थे, तो I was into this Oh, क्योंकि वो सब जो है palmistry करते थे, तो of course मुझे भी बड़ा interest था कि ये कैसे होता है, और वो भी वही predict करते थे future, तो मैंने कहा मुझे भी शौक था कि how I would actually get into their roles and predict the other people's future. तो उसके लिहाज से मैंने स्टडी किया उस पे, और मैं आई वाज वेरी यंग, मतलब ऑफ कोर्स शुरू से ही, क्योंकि हमारा मुझे जो है इसका एक्सपोजर था पामिस्ट्री का और एस्ट्रोलॉजी का, और फिर जो है कुछ मतलब बेसिकली आई विल शेयर समथिंग बिकॉज आई हैव रिटन इन द बुक आई डू हैव लाइक आई kind of psychic abilities also, because हम लोग जब जहाँ जिस घर में रहते थे in Pakistan, of course in Karachi, तो वो it used to be a haunted house. So okay. the thing is like all these things made me actually look at beyond these physical laws, beyond whatever is happening around us, and there was a lot going on at that time, and because बहुत सारी चीजें थी जो कि I used to feel, I used to sense, and other people were like, you know, they would say कि ये क्या मतलब, are you crazy, तुम्हें ये क्या चीज समझ आती है? So you know there was a lot going on at that time when I was very young. So Sure. that's the maybe like a brief answer to your question. No, this is amazing, right? And काफी misconceptions है and काफी चीजें, you know, आज and I'm going to ask you something which I'm putting it out there. It's going to be a little controversial, which I'm going to ask you, Sure, right? no क्योंकि problem. you know आज palmistry in you belong to Islam and when I belong to Islam religion, right? Yeah, Palmistry is not a topic which we talk about, right? We don't believe yeah, in that, right? Numerology, astrology, palmistry, none of that. And I'm surprised, and believe me or not, why? Because your entire lineage, your grandfather, your father, your yeah, uncle, were all in that, right? So it's beautiful. And I'm saying yeah. it's beautiful, right? That you all were doing this. So did you all see resistance? Did your family see resistance about this It from a was religious? all for the, yeah, for the passion or something. And yes, it was because of the religion and everything, because it's prohibited. So I that's why I stopped it because उस time पे तो शौक में बहुत कर लिया, और then of course I realized it's not right. Yet there are lots of things that I question, that why it is uh, prohibited, because palmistry अगर मैं देखूं तो it's not only about predicting future. As a psychologist, जब मैंने psychology भी पढ़ी तो I actually used to read palm to understand others' personalities as well. Yeah. So that's what I used to actually, I still wonder, I mean I stopped it, but ये चीज जो है मुझे अभी भी मतलब I don't have any answer to that, लेकिन I don't know why it's prohibited. Yes, prohibited is that we cannot predict future, but I think it's fine to understand others' personality, because that's what we do. Even for in psychology, we have lots of tests, like psychological tests we give people to understand their personality. So it is one of the ways.
which Yeah. actually I still use. I mean, अगर मैं predict future तो नहीं करती, मैं उनको बताती भी नहीं, but I do use it to understand them, to to have a better relationship with with my colleagues, with my friends. So, Okay. yeah. So I'm going to put you on a spot here. No Right? problem. So left read करते हैं कि right read करते हैं? It's a combination of both, Okay. basically. Okay. So Usually, you can see my hand, right? yeah, definitely. So Yes, what's I my can see. personality? Let's not talk about the future, right? But this is my right hand, by the way. So you Yeah, can talk about the personality which you said. yeah. It's basically अभी तो खैर काफी वो है बहरहाल. I think you are very decisive. What Okay. I've seen in your path, that somehow I don't know. Oh, it could be. It's not a prediction, but I would just say that maybe you had some trauma during, or maybe mental कोई आपका बहुत strong वो था in the mid years of mid life, or maybe it has some impact on your personality. Maybe it changed your life or something, or that's what I saw. That's it. I think that's it. No, uh, this is interesting. Okay. yeah. You want, meaning I'm okay. If you can talk more about this, right? Meaning on this Yeah, we show, can right? talk So even after the show. I can talk more about no, that's this okay. amazing reason. मैं बोलता हूँ मैं खुली book हूँ, right? So I'm okay, Yeah. right? So, and what about this one, right? This is left hand. This is actually, left hand is what you do, right hand is what is given to you. So Oh, that's how it is. That's oh, how the interesting. difference is. That's basically what God has given you, and what yet, I mean, what I found in the palmistry, जब मुझे ये काफी bother करता था कि हमारी लाइफ हमारे हैंड में है कि नहीं है. Right, So जब मैं palms की read करती, like once you have a certain line, you cannot erase it. But what you can do is you can have another line, right? And that's how you change, right? That's how you actually get charge of your destiny. आप अपना, whatever is given to you cannot be changed. right. It's all, I mean, what I have even written in the book, that it's all how you actually realize the purpose of your life, and then how you actually bring those events in life, how you change the track of your destiny. You build another line, and that's how you take the charge of your destiny. So, meaning I'm fascinated now. I can go on and keep showing my hand to you, right? Sure. And you can keep talking more about it, right? And take up free services. But, interesting switch, right? Like, and you said this, कि मैं जब भी predict करती थी और हो जाता था, right? हाँ. And इसमें क्या होता है कि people forget, right? And that's a psychology. Then people start looking at you as a divine power. That यार आपको कुछ बख्शा गया है या आपके पास कुछ है जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो और ये सही है, राइट? जो ये होता है, राइट, कि दे पुट यू ऑन अ पेडेस्टल एंड दे से ओके यू आर व्हाट यू आर, राइट, एज एन एग्जांपल. सो व्हाट, and you said you went on this path, ये हो क्यों रहा है? What is prompting people to actually get what you're predicting? So how did that happen? Like what was that turning point, or what was that friction point which made you say, yeah, there is more to this, right? Why? Okay. Yeah, I'll tell you about it. Basically, I share a lot with my audience, मैंने दूसरे भी उसमें. Like when I was young, right? So, like मैं जब है college मैंने start किया था, like high school finish किया था. So what happened is कि my father used to be in Pfizer, ठीक है? Okay. और उनकी बड़ी stable job थी, and of course it was good, but at that time जो है उस वक्त बहुत laid off किया की कंपनी ने, and he lost the job. Oh. And once he lost the job, we started having like financial problems a lot. ठीक है ना? क्योंकि of course उनकी कोई job नहीं थी, and we were like only relying on his salary. So जब उनकी job नहीं थी तो हमारे financial बहुत ज़्यादा खराब हुए. And then at that point in time, जो है I started develop a very severe depression. I mean, because at that point in time I thought कि ये क्या हो गया ना, life अब तो कुछ नहीं अच्छी हो सकती. And at that point in time, I even had suicidal thought, because I thought I don't want to live in this
miserable life for the rest of my life, because I thought कि ये तो नहीं अब change होने वाला. हम्म So I was very depressed. I thought that it's not something that I want, because of course same उस time पे at the back of my mind was there कि okay, this is in my destiny and it's gonna happen like this. और वो यही चीज जब है ना, वो मुझे बहुत bother कर रही थी. And then and I used to, and that जब मैंने decide कर लिया, I mean at that point in time I decided that I want to end my life. I don't want to live anymore. And then when I decided, I started looking for some painless ways to have my to have death, right? कि किस तरह से आप induce करेंगे. जब मैंने देखना स्टार्ट किया, मैंने कहा ये भी मुश्किल, ये भी पेनफुल है, ये भी पेनफुल है. एंड इन दैट लाइक व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर इट, एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली इट्स नॉट द the life that I'm trying to get rid. It's the pain that I'm running away from, right? So like वही काफी conversation I used to think a lot. I used to have the conversation in my head कि ये क्या हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं. So उसमें I just realized कि this is, I mean, I don't want to end my life. I wanted to get away from the miseries and the pain of the life. And then I thought कि what if कि there are chances that I can take charge of my life, take charge of my destiny, right? तो फिर जब मैंने ये अपनी थिंकिंग चेंज की, and then I started seeing, like, you know, it's like a cliche that when you start changing your thoughts, or when you start looking at the things differently, things become changed, right? Things you look at change, and it did happen बिल्कुल ऐसे ही. मतलब फिर मुझे वो चीजें शायद जो है opportunities नजर आने लगी. And you know, one thing that struck me so powerfully जब मेरी थिंकिंग को और भी चेंज, आई मीन ये नहीं हुआ था कि एक दिन ही उठ के मैं सोच रही हूँ और फिर दूसरे दिन मैंने ये कर लिया. इट देयर वाज लाइक लॉट ऑफ time that I had these discussions in my head, maybe like it's over months and maybe like a year or so. But one event, I mean, it was a very insignificant. Of course, everybody must have experienced. I saw a trail of ants going on. ठीक है ना, वो इतना heavy load carry करके एक ही path पे जा रही थी. They are following the leader, right? Of course, एक ही तरीके से जा रहे हो, तो इतना है, मैंने कहा इतनी insignificant, इतना सा उनको जो है वो वही follow कर रहे हैं. And then of course their path was, you know, somehow obstacle thing. So what, I mean, that insignificant ant, I mean, they did not actually, they didn't give up. They changed the path. I mean, I know this is something very, we see it every day. It's not, but I think जब आप शायद सोच रहे होते हो, जब आप उस चीज को एक different angle से देख रहे हो, then it just struck me that okay, what if the path that I've been following is शायद यहाँ पे अगर obstacle आ रहा है, तो I need to change the path. And then of course everything started. अब उस time पे I was very young, like I was in my teens, right? And then I decided actually, okay, I want to write the book, because I know that this is how we can change our life. I thought that अब ये जो है उस time पे, I know if I had written the book at that point in time, nobody would have listened to me. So what I did that at that point in, and of course at that time, at that point in time, मेरे पास resources भी नहीं थे. I was of course very young, and having a background of, you know, South Asian female, जिस पर बहुत ज़्यादा pressure होता है to get married, to have kids, to have, like, you know, a stable sort of path. Yeah. तो उस time पे मैंने decide किया था कि in 20 years I will write that book. So वो मैंने अपने आप को target दिया था कि in that 20 years what I will do it, कि मैं और इस पे study करूँगी. In that 20 years, I decided that I'll establish my career. In that 20 years, I decided that I will, of course, get married. I'll have kids. I'll have a stable life. And then I'll work on the dream. So that is, and one thing that, of course, I decided, okay, I know that life, if I can change life, and I know that this is something that I know that people can change life, right? अगर तो वो I started, you know, writing, और वो पूरा मैंने जो है at that point in time I written down my strategy कि क्या करना है मुझे in पूरे 20 years में. So I started blogging, I started writing. I remember 2002 में मेरा first article जो है Dawn newspaper में publish हुआ था. So like in that point in time जो है मैंने इस तरीके से सारा I started giving lecture in different universities. So वो it's all passion. मेरा जो background है, मेरा जो profession है, marketing research.
but that is something that was the purpose that I realized at that point in time. So No, that's how that's I came no, into. that, and you spoke about, जब ये आप मेरे हाथ देख रहे थे तो आप बोल रहे थे कि कुछ मिड लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है which has made me what I am today, right? Yeah. Uh, and all of us go through certain things in life, right? And you're right. I've had, not just in midlife, but as a child, I've had trauma. I've had traumas all through, right? And uh, I will share it openly, and I've shared this in my different podcasts as well through this entire season 3, that we don't realize ये traumas जो होते हैं and how deep impact it has in our life and where it basically gets us, right? And then there are practices, right? You had a practice which was introspection. You were trying to introspect, and आपको answer मिला कि it's not बिल्कुल. about कि it is not about this life. It's about the pain which you are trying to get away from, right? Like you said, Yeah. right? You want to end this misery, and you were taking that misery to entire life towards, and not just towards that moment or that pain or that situation which was Yeah. there, right? And all of us have been through, and I continue, meaning it's not just traumas happen in the early childhood. Yes, those childhood traumas or midlife traumas or teens traumas have a deep impact, right? And we बिल्कुल. all need to mend over it, and it's beautiful that you've mended over it. You've done your own, uh, I would say, reincarnation of yourself, right, from where Yeah. were you, right? And all of us have to do that, but unfortunately some people are not able to get there, right? And some people are able to get there, like you, which is beautiful. Now, but you you said that 20 साल में मुझे करना है. Why 20? Why not 10? Why not 15? Why 20? What was that Yeah. significance of 20 years? यस एक्चुअली वो उसमें मैंने अब देखें ये था कि 20 इयर्स में मैंने इस तरह से अपने आप को जो है मैंने ब्रेकअप किया था कि 10 इयर्स में जो है ना मुझे अपना जो है कैरियर लाइक 5 इयर्स आई नीड टू फाइंड अ गुड जॉब and start a career, right? And Mm-hmm. then next 5 years I need to get married, and then after that of course when I produce kids तो वो उनको भी बड़े हो जाना है because I know कि जब छोटे बच्चे होते हैं then I know I won't be able to write a book. Yeah. So that's why जो है मैंने 20 इयर्स इस तरह से दिए थे. मैंने कहा लाइक अगर लेट्स से बच्चे मेरे 10 साल के हो जाएंगे तब मैं जो है अपना बुक Mashallah. लिखना स्टार्ट करूंगी. So that's how I planned Yeah. it. Very, very interesting. Very interesting. Now let's switch gears, and I want to come back to the algorithms which you spoke of, right? कि ये algorithms है, and I don't want you to reveal everything. Then वो book का फायदा क्या है? Then I would want people to buy that book. But the question is, uh, can you give an example of one or two algorithms which can be like wow, and something which even I have not? And by the way, I'm in the space of data science and analytics and AI, right? So I also try to find algorithms which can make our jobs easy. But what you're talking about is algorithms of life. So would love to get, and do these Sure. algorithms also use some data? And I would love to look at it from these lenses also, Yeah. not just talk Okay. about the algorithm. So yeah, if you can Yeah, share that. I'll actually tell you about like what exactly the concept is, and then of course those who want to read further, they can actually get buy the book and understand कि उसमें किस तरह से मैंने लिखा है. मैं briefly आपको बताती हूँ कि basically is what do I mean by the algorithm. So um, what I feel is like जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मैं palmistry करती थी, and I know that everything is sort of I feel कि सारा कुछ जो है predestined है, right? अगर Mhm. आप किसी का प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर, सो इसका मतलब है कि वो तो सेम ही यही होना है ना उसकी लाइफ में. उसने तो कुछ नहीं किया, उसके लाइफ में जो इवेंट्स होने हैं वो तो होने ही हैं. सो Right. व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन वाज आई वाज मैंने जितनी भी मतलब फिलोसफी पढ़ी, न्यूरो साइंसेस पढ़ी, और उसमें मैंने यही क्वांटम फिजिक्स पढ़ी, तो उसमें मुझे यही सिर्फ आंसर मिला कि यस एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड. Hmm. जो है कुछ भी मतलब आप न्यूरो साइंसेस अगर उठा के देखें तो उसमें भी ये होता है कि आप whatever the decision you are taking at the moment, it's actually has been decided in your brain a few milliseconds before it comes to your consciousness, right? So Mhm. that is neuroscience. अगर आप quantum physics की बात करें, जो Brian Greene is the late string theorist है, and in his book The End of the Time is he said कि like this the entire world is governed by the physical laws. Mhm. और अगर let's say
ये सब हम जो भी हमारे भी लेट्स से जो भी चीज हो रही है, ठीक है ना, आप अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे एंड यू सी दैट वी आर एक्चुअली रिएक्टिंग टू ऑल द फिजिकल लॉज। अगर लेट्स से अगर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है, स्टोन भी है, उसके ऊपर भी अगर कुछ उस किस्म के जो फिजिकल लॉज उसके ऊपर हो रहे हैं और वो जो रिएक्ट कर रहा है वो अपनी कैपेसिटी में वो वैसे ही करेगा, वी कैन प्रिडिक्ट, राइट, बिकॉज एग्जैक्टली इट्स हैपनिंग। तो फिर मुझे यही हुआ कि लेट्स से आप इवन आप इफ यू लुक अराउंड एवरीथिंग इज गवर्न बाय दैट एल्गोरिदम्स, राइट। आप ये देखें 14 बिलियन ईयर्स से हमारी दुनिया जो है, इस ये यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, राइट, इट वाज मेंट टू हैपन सेम, आई मीन 14 बिलियन ईयर से सन जो है सेम टाइम पे निकलता है, एक सेकंड भी कभी लेट नहीं होगा। नेचर डज नॉट, आई मीन यू कैन नॉट फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ दिस कि कुछ लेट हो गया या कुछ कमी कमी बेशी नहीं है नेचर, बिकॉज एवरीथिंग इज गवर्न बाय दीज एल्गोरिदम्स, राइट। आप अगर एक बैम्बू सीड भी डालेंगे ना तो बैम्बू ट्री ही निकलेगा, उससे उससे एप्पल ट्री नहीं निकलेगा, because it is governed by the algorithm. So these are the algorithms, these are the physical laws that we are meant to follow, ठीक है ना। अब हमारे कंट्रोल में क्या है, that's the big question, right? मीनिंग So अगर मुझे मैं अगर आज बैठ जाऊं, लाइक somebody decides कि यार मैं बैठ जाता ना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, कुछ है, yes, द नेचर द फिजिक्स विल give me food also, even I don't have to work, I will do that, but that is not yeah, true, right? We also have to that play a is part. true in some way, in some way I'll tell you that what exactly is that, because यही हमारा जो जो I actually जो अगर आप मेरे प्रोफाइल में भी जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, free will remains an illusion of control unless you understand the algorithm of life. So it remains the illusion. आपको लगता है कि हमारे कंट्रोल में है, but actually it is not, unless आपको पता लगे कि हो क्या रहा है. So what is like here I will quote Shakespeare. Shakespeare, in his play, As You Like It, he said that this world is a stage, right? And Mhm. each one of us, like, come into this world, play our part, and exit. So Right. that's exactly that. Everything is predestined. Even if you think that this conversation was meant to happen the same way with same dialogues and nothing could change, right? But what we can, I mean, I'll go back to the Shakespeare. सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है, हमारे Right. हाथ में क्या है, वी चूज द रोल्स आवरसेल्फ, ठीक है ना। ये रोल्स सारे डिसाइडेड हैं, दे वुड बी अ लूजर, दे वुड बी अ विनर, दे वुड बी अ समथिंग, तो ये सब कुछ तो डिसाइडेड है ही है। दे वुड बी वन एलॉन मस्क, बट नाम नहीं है उसका। दे वुड बी वन जेफ बेजोस, दे वुड बी वन समवन हु इज मे बी लाइक having a miserable life. So Right. all these destinies are pre-decided. अब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, which I have given in the book, is basically that it's all these roles are just like a train tracks. सारा एक ट्रैक एलोन मस्क का बना हुआ है, एक और जेफ बेजोस का बना हुआ है, एक और किसी मिजरेबल बंदे का बना हुआ है. सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड. आपकी भी जो डेस्टिनी है वो आपकी डिसाइडेड है, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू हैव इट इन योर पाम, राइट? बट आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? Right. आप चेंज ऐसे कर सकते हैं कि अब सारी दुनिया इज गवर्न बाय द फिजिकल लॉज, राइट? वी आर ऑल्सो. You need to think beyond the physical laws. And how would you think that? Because आप जो हैं, or like we are humans, we are not just the physical beings, we are a spiritual beings. The only thing that is above and beyond is our soul, and Right. that has the power to change. And how would it change? It's basically इसमें से होता है कि आप देखें, soul is the pure energy, right? And Yep. how exactly you change it, it's if you अगर आप analyze ourselves as a human, so हमारी जो thoughts हैं, that also energies, right? All synaptic connections, जो भी reactions होते हैं हमारे mind में, that produce energy. So what you can do, how you can change your life is through your thoughts, right? And this is again, this is the proven, I mean, quantum physics इसको prove करती है. There are studies कि आपकी जो thoughts हैं, Right. it does not only change, I mean, आपकी physiology change नहीं करती, like neuroplasticity, you must have heard about this term.
अगर आप लेट्स से पॉजिटिव थिंकिंग करते रहेंगे तो यू फील गुड, आपके पूरे माइंड का जो अंदर की फिजियोलॉजी है ना वो चेंज हो जाती है, आपकी बॉडीली चेंज, जो अंदर के सिम्टम्स है वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज आपकी वो एक एनर्जी उन्होंने क्रिएट की है, उन्होंने एक न्यूरल पाथ क्रिएट किया है एंड विच इज मेकिंग यू योर बॉडी फील गुड। तो वो तो हो गया, लेकिन thoughts also have the power to bring change in the हम्म surrounding, and how? Through quantum entanglement. If you have heard, the quantum entanglement is basically एक जब बहुत ही आपके जो thoughts if are power are it's supercharged with your emotions, right? It creates such powerful energy that it actually send the signal to the universe, right? अब आप यूनिवर्स में से लेट्स से कि क्या कर रहे हैं, आपको लेट्स से आपने जो है एक पर्पस रियलाइज कर लिया कि दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, you राइट have that energy, a burning desire to actually follow your dream. अब आपकी रिसोर्सेज नहीं है ना, आपकी डेस्टिनी है उसके लिए, बट यू हैव द डिजायर। व्हाट यू डूइंग इज, आप तो उस ट्रैक पे जा रहे हैं जो कि लेट्स से जो है ट्रैक इज फॉर लेट्स से नॉट वेरी फॉर्चुनेट और मे बी नॉट वेरी अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है? आप हो सकता है कि यू मे फेस सम ट्रबल्स और समथिंग, बट at that point in time you say no, I don't want to follow this path. You said that I want to become maybe someone like Elon Musk, right? And you राइट have that burning desire, आप उसको बार बार सोच रहे हैं, बार बार जो है आप लेट से विजुअलाइज कर रहे हैं, what are you doing is sending the signal to the universe. आपकी जब बार बार ये जो सुपर चार्ज थॉट्स हैं आप जब एक भेजते हैं, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाट बेसिकली योर सोल इज डूइंग, राइट? यू नो दैट यू हैव दैट पावर, योर सोल इज एनर्जी, यू आर योर सोल इज ट्रिगरिंग दिस, एंड दैट्स हाउ यू सेंडिंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स। अब आप जब बार बार वो कर रहे हैं तो सिग्नल इज this energy has the power to create entanglement, like जो events let's say maybe in someone else life आने थे वो आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन नॉट चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बिकॉज वो तो स्क्रिप्टेड है। यू कैन ओनली स्विच लेन्स, right? And that's how you see, I have seen number of people, and that's my experience also. अगर आपने ये पर्पस बना लिया आपका और आप ये बार बार आपने विजुअलाइज कर लिया है, कुछ सोच रहे हैं, you start to see miracles happen in your life. आपको कहीं ना कहीं से कोई आ जाएगा, मिल जाएगा जो आपको बोलेगा ओके दिस इज हाउ इट इज। सो वो आपकी टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ। आप वो स्विच कर रहे हैं, आप अपनी आपने स्वैप की वो वाली लेन जिस पर आपकी डेस्टिनी थी, यू गो टू द अदर लेन, but the thing is that lane is also not your purpose. That's how you keep on swapping lane. अगर आपने अपनी डेस्टिनी को आपने लेट्स से नहीं रियलाइज किया कि व्हाट इज योर पर्पस इन व्हाट यू वांट टू डू, तो यही होगा, किसी ने आपको पुश कर दिया, यू मे लेट्स से हैव अ वेरी गुड फॉर्चून, बट आपके लेट्स से जो है या फिर आपकी कोई बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो जाएगी। यू वुड बी लाइक हैविंग अ रैंडम इवेंट्स इन योर लाइफ, यू वुड। लेकिन अगर आपका पर्पस है, यू इसमें जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ मिरेकल्स ही हो, पॉजिटिव थिंग्स, मे बी यू मे हैव अ वेरी बैड एज यू सेड कि कोई ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन अगर आपका पर्पस, यू हैव द पर्पस, यू सेंडिंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स, दैट विल लीड यू टू योर गोल। आपका वो जो है लेट्स से वो मिसफॉर्चून या जो भी इवेंट्स होंगे वो आपको इतना मेच्योर करने के लिए होंगे कि ताकि आप वो जो है स्वैप करते रहें लेन्स, राइट? एंड इवेंचुअली यू विल, एंड दैट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर विलिंग टू एंड्योर फॉर योर गोल, ठीक है ना? कुछ लोग बीच में अगर छोड़ देते हैं, कहते हैं अब तो मुझसे हो ही नहीं रहा, they will be in the middle, hanging in the middle, they wouldn't go and reach the goal, वो उनकी intensity खत्म हो जाती है। So this is, I mean, I would say in a very brief uh, how you can actually take charge of your life. I know this is so beautiful and clearly I don't, when you were talking, आप जब ये बात कर रहे थे तो मैं इधर से एक कान से दूसरे कान तक हंस रहा था और खुश हो रहा था because there have been certain things which have happened in my own personal life and I have shared this in this podcast, right? जो मैं था और जो मैं हूँ अभी, right? It's been a big transition and it's work in progress, right? हम कभी हो नहीं जाता है, right? कि अच्छा चलो हम पहुंच गए, right? We are everyday work in progress. So, and you so aptly said, right? And it's
and the point which you spoke about the spiritual energy, right? Which is that soul Yeah. energy, right? Uh, and spirituality doesn't mean religious, right? They're two different things, Yes, of course, yeah. right? And unfortunately, people mix that up, right? उनको Yeah. लगता है कि वो दोनों सेम चीजें हैं, but नहीं. नहीं. एंड स्पिरिचुअलिटी में काफी प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसा आपने बताया विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, राइट? इट्स बिल्कुल. सच अ पावरफुल प्रैक्टिस व्हिच मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड, डोंट नो व्हाट टू डू, डोंट नो हाउ टू डू इट. There is mindfulness practice, there is visualization practice, right? Like I have started practicing breath work. जब भी आप Yes. breath work करते हो तो आपको, और कि एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो क्या होता है कि वो रिलीजियस कॉनोटेशन में चले जाता है, एज हाँ. एन एग्जाम्पल कि अरे ब्रेथ वर्क तो वो योगी सन्यासी करते हैं, राइट? विच इज नॉट ट्रू. मीनिंग यू यू Yeah, ब्रीथ, it's you not breathe, you breathe, exactly. you Yes. breathe every day, right? But if you do Yeah. conscious breathing and do mindfulness breathing, it changes your perspective, right? एंड टुडे फॉर एग्जाम्पल, एंड ये कल हुआ है मेरे साथ, मैंने कल इनफैक्ट आज, हाँ इनफैक्ट परसों, मतलब डे बिफोर yesterday, I was really disturbed, I was really frustrated, I am saying this, right? I was really walked upon, right? So I was in the gym, I was working out, and after that I decided, okay, let me just practice mindfulness breath work, right? And I put on my music, which helps me get into a proper breathwork rhythm. And I did that for 10 minutes, just 10 minutes, not Yes, not yes, for of like course. half an hour, 45 minutes, just बिल्कुल. 10 minutes. इसके बाद my energy levels were very different. My perspectives were very different. I was feeling fresh. Prior to that, that entire 2 3 weeks, I had not done any breath work. I had not, probably the last breath work I did was 4 months ago. I had not done that. And I realized that it's such a powerful tool. And in spirituality, you have so many such tools which you can adopt, which you can all practice, all of us can practice. बिल्कुल. And it's great that I'm listening from you, and I'm being very candid, somebody who practices Islam, talking about spirituality and mindfulness and visualization, which doesn't get spoken about, right? I'll be very candid, Yeah. that doesn't get spoken about because it gets into the connotation of religion, right? uh, मसला पता है क्या है? आई एम सॉरी टू कट यू. द थिंग इज कि रिलीजन की जो है ना नॉलेज ही नहीं है हमारे पास. आई मीन right, आई रियली डोंट. जो क्वेश्चन मेरे पास होते हैं ना, मैं जब सऊदी मूव हुई तो आई स्टार्टेड टेकिंग कुरान क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग. वही जो लिखा हुआ है कुरान में आपने वही. आई मीन कुरान जो है ना इज सच अ वंडरफुल बुक. yeah, और आप उसको जिस लेवल पे स्टार्ट करेंगे ना रीड करना, वही आपको आंसर मिलेंगे उसमें. right, और बिलीव मी, दीज जो भी मेरी जो इंस्पिरेशन फ्रॉम माय बुक इज कमिंग फ्रॉम रिलीजन, फ्रॉम इस्लाम. ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब जो कॉन्सेप्ट है which I gave you about these following these lines and everything, it came from Surah Fatiha. mm, When अगर सूरह फातिहा में आप देखें तो उसमें आपको इट्स अ दुआ. इट्स अ right, दुआ एंड अल्लाह ताला सेड के जो है हमें उन लोगों में शामिल करो जिन पर अल्लाह की ब्लेसिंग्स हुई है. राइट? right, अल्लाह ताला डिडंट से कि है ना हमें सब दे दो. ठीक है? सो दैट मीन्स, आई मीन दैट I could be wrong, interpreting wrong, but yeah, basically Allah Ta'ala didn't say, okay, I want, okay, give me everything. Allah Ta'ala said, put me in those people, ठीक है ना, in that proportion जिन पे अल्लाह की blessing हुई. तो आपको वो choose करनी है destiny which Allah Ta'ala actually, those people जो कि अल्लाह ताला ने bless किए. Right? So I mean right. there are so many things which I took the inspiration from religion and from Islam, but the thing is that people don't talk about it क्योंकि No, उनको and समझ नहीं आती. अगर आप ये बात करेंगे ना तो बोलेंगे ये क्या डेस्टिनी आपने कह दिया. कि बिलीव मी, मैंने ये एक पोस्ट डाली थी अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, and people say that you are saying kufr and something. I mean, I said how? Because they don't understand. They don't understand. and ये जो, sorry, I know this will get into a very different topic on this, Yeah. right? जो बोलते हैं ना दीन इस्लाम, या people who understand religions, right? It's not just Islam, it's any religion. People who Yes. understand, Yes. because, and it's interpretation, to your point, Yes. right? वो जो interpret करते हैं उनको लगता है कि वो interpretation right है, right? And हाँ. क्योंकि and the, like you said,
whether Quran, even I have read, it's such a wonderful book, and it's other books also, right? It's not just when you read it, it's your interpretation on how you interpret it and how you Exactly. live your life, right? To your point. एंड वो चीज है ना, वो काफी अलग डायरेक्शन पे चले जाती है एंड आई डोंट वांट टू गेट देयर, मैं राइट? आपको बताऊं यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज कि इट्स आई रिटन इन माय बुक बेसिकली जो ऑल इफ यू स्टडी ऑल रिलीजन्स बिकॉज मैंने काफी स्टडी किया 20 साल में मैंने स्टडी किया है सारी चीज Yeah. सो व्हाट And आई डिड फाउंड वाज palmistry is a practice which is practiced in Hinduism, right? It's a big आई practice. मीन इट्स बिग प्रैक्टिस यस Yes. वो सारी उसमें लेकिन मैं आपको बताऊं जो सारे रिलीजन है अगर आप रिलीजन को देखें तो सारे रिलीजन क्या कहते हैं सारे रिलीजन में एक आपको मिलेगा गॉड ठीक है ना वो सब आपको अच्छी पॉजिटिव बातें करोगे ठीक है ना एवरी रिलीजन सेज द सेम थिंग एंड आई हैव रिटन इन माय चैप्टर फेथ व्हाट आई सी के देखें आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट ठीक है आई एम अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम बट personally if you ask which religion is right somehow you have lots of question in Islam which you don't find answer you Yeah. have lots of question in Christianity which you don't find answer ठीक है तो कोई रिलीजन भी परफेक्ट नहीं है सच्ची बात है मतलब आई Right. वुडंट से कि जो आपको इतने 100% आपको आंसर दे दे कि आप 100% कहें कि नहीं यार मुझे जो है ना इस पे पर्सन वो बिलीव है लेकिन अगर आप उन सबकी एक कॉमनैलिटी निकालें ना तो उसमें यही होता है कि एक गॉड है ठीक है ना जिसमें जो कि सुप्रीम पावर है ठीक है और वो एंड दे आर ऑल टीचिंग द मॉरल वैल्यूज के आप यू हैव टू बी गुड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड ऑल द गुडनेस सारे Right. रिलीजन कोई रिलीजन भी आपको ये नहीं बोलेगा कि जाके ना उसको मार दो और उसका ख्याल ना रखो और ये ना करो और वो ना करो so all teach positivity goodness and have the supreme authority Yeah. so one point here is that why do we need religion why do we need faith it is basically for our own self Yeah. अगर आप To ये keep us देखें कि grounded. why do you exactly it's basically why do you need a god because अगर जब तक आप अपने अपने माइंड पे रह के सोचते रहेंगे ना कि ओके आई बिलीव इन माई सेल्फ यस इट्स गुड थिंग बट इफ यू थिंक दैट आई एम द पावर तो आपका माइंड एक ह्यूमनली पॉसिबिलिटीज में फंसा रहेगा ठीक है ना इफ यू थिंक कि आज आप लेट से मैं बोलूं कि मैं इतनी फेमस हो जाऊं लाइक एलॉन मस्क तो मेरा माइंड मुझे पहले ही मना कर देगा बिकॉज आई एम थिंकिंग इन लाइक इन ह्यूमन परस्पेक्टिव लेकिन अगर मैं प्रे करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ ठीक है कि या कोई भी रिलीजन में कोई भी दुआ करता है तो वो क्या कर रहा है दे आर एक्चुअली अपनी ही ह्यूमनली बाउंड्रीज को जो है एक्सपैंड कर रहे हैं सो इट्स बेसिकली व्हाट दे डूइंग इज दैट they actually assume the power I've written that it's like our Yeah. mind assumes the godly power that you know then we create miracles बिकॉज Yeah. जब तक आप अपने उसमें सोचते रहेंगे ना दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ आप Yeah. कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं बट Yeah. यू नीड टू हैव अ फेथ अब जितना अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होगा यू विल विटनेस ऑल द मिरेकल्स जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं ये कुछ नहीं होता तो वो नहीं होगा बट Yeah. this is you need it because your mind needs to break all these humanly possible boundaries Yeah. You need to have strong faith and you need to be spiritual, right? And spirituality and faith are two different things, right? And people mix it up, yeah right? yeah I And mean you need to have someone you need to have a faith that there is a supreme authority out there who is actually working अब I have another theory which I'm also writing in another book basically okay, basically it's all we came from God and we are part of the God I believe that it's not क्योंकि अगर आप किसी भी रिलीजन में देख रहे हैं ठीक है ना आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो वो जीसस जो है वाज द सन ऑफ लेट्स से जैसे ठीक है ना और वो फिर जो है हमारी ही एक उसमें से आते ठीक है सो वी आर पार्ट ऑफ अगर आप इस्लाम में कहें तो आप उसमें ये देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम. हमें जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूप अल्लाह ने फूकी है ठीक है ना सो वी आर पार्ट ऑफ इट हम Yeah. उस पार्ट को जो है ना वो ही हम बिलोंग करना चाहते हैं दैट वननेस वी नीड वी आर लॉन्गिंग फॉर दैट आई मीन रिसेंटली कुछ एक वीक पहले ही मैंने शायद वो पोस्ट डाली थी कि हमारी सोल जो है ना दैट इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट वननेस टू एक्चुअली वो जो आप अल्लाह से करीब होना चाहें आप उसको यूनिवर्स बोलें या जो भी बोलें ठीक है ना आप उससे आप करीब कैसे होंगे और वो आप ऐसे होंगे कि यू नीड टू हेल्प पीपल अराउंड यू ठीक है ना वो आप कनेक्टेडनेस आप लोगों की हेल्प करेंगे you will feel good and then you will start getting closer to let's say universe or God whatever you say
And that's why basically that's how you go. I mean, you say it spirituality or let's say कोई religious आप कहें या whatever you say. Very interesting. No, and I want to switch this a little bit, right? Sure. Now you are writing books, right? You are doing this, and you're also working, and you are a Yeah. mother, right? Yeah. You are a wife. How do you balance time? How do you ensure that you're able to get everything done? And you said you had a plan, right? And I want to go back Yeah. to that, right? Okay, Yeah. 5 years, 5 years, 5 years. You know, how do you plan? How do you get around things, right? Yeah, it is Doing too what you're much. doing. Yeah, of course, it's not easy to actually manage everything. Of course, when I have projects, professional projects होते हैं, बच्चों के स्कूल भी होते हैं. Of course, अपने family और husband का भी ख्याल रखना है. And managing home itself is a complete, like more than 24 hours job, I would say, कि वो सारी Yeah. चीजें होती है. अब इसमें I would say एक तो ये कि आपने first of all you need to take care of yourself first. That's why I wake up early in the morning. आप नमाज पढ़ने के लिए फजर में उठ जाएं, let's say 4 बजे 5 बजे, ठीक है ना? 4 o'clock 5 o'clock I wake up. नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के and then I do meditation, breathe work जो भी होती है, breathing exercise. It makes me एक तो मुझे थोड़ी सी sanity मिलती है उससे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपका डे जो है ना it starts with a very good. फिर you have to follow very strict discipline कि usually visualize कर देती हूँ अक्सर sometimes that okay I need to do these tasks okay in that particular time. अब I'm writing a book also in that कि ये जो perception of time and space है ना again this is all physical. Right. But you need to think that you are beyond you exist beyond these physical laws. तो ये सब आपके काम के होते हैं, ठीक है ना? आपने अगर let's say टाइम भी करना है, आपके पास 24 hours हैं, this clock is saying आप 1 घंटा ही दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद ही देखें, if you're doing some of the interesting work, आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा. कोई बोरिंग काम करके देखें, घंटा नहीं गुजरेगा, ठीक है? This is all perception. The time आपको लगता है कि 24 hours हैं, but how you manage time and how you use it, आप अपना परसेप्शन कैसे करते हैं ना, वो उस पर टाइम होता है, ठीक है? आपने उस पर टाइम लगाया कि आपने इतना इतना करना है. फिर सेकंड ये कि बी प्रेजेंट इन व्हाटएवर यू डूइंग. That's how you do it, right? अगर let's say if you are with kids, be with them, ठीक है ना? अगर let's say मैं उनके साथ अगर पार्क जाती हूँ, I don't take my phone with me. I just be with them, there with them, like stay with the nature और सारी जो भी चीज होती है. So even I take it everything. Let's say अगर मैं प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम है, तो I don't put so much focus on social media. I maybe पुरानी जो कुछ पोस्ट है वही डाल दी या फिर कर दिया. अगर बुक लिख रही हूँ तो वो मैंने डेडिकेट किया है, 1 hour मुझे देना है, तो फिर वो मैं इस तरह से कर सकती हूँ. घर पे आई नो दैट आई हैव टू कुक, आई हैव टू डू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, तो उसके लिए मुझे इतना टाइम तो चाहिए होगा. सो यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन लाइफ. प्लान अगर होता है ना तो काम बड़ा आराम से हो जाता है. और यही मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मेरा प्लान नहीं होता ना तो द एंटायर डे गो वेस्टेड. लिटरली कुछ नहीं होता. लेकिन अगर प्लान होता है तो फिर आई अचीव अ लॉट even in less time. No, and there are certain things which you just spoke about right now, not only just visualization, but you also spoke about how you are in the control of what you do rather than thinking, oh, you are in the control of all these physical laws, right? Which you just said. And if you change those perceptions and if you change those thoughts, it really helps you be ahead and be bigger and larger than this 1 hour or half an hour. Absolutely. And I think that's very beautiful what you've just said. I would love to continue this conversation. And I told you before we started recording, this is more of a selfish piece than where I'm doing this podcast for my own learning, but I'm sure that the audience are also getting different perspectives. And like you said, one thing, that I had thought, okay, this is what this podcast is going to be, but this season specifically is turning out to be a very different one than what I have done before too, right? And you can call it destiny or you can call it manifestation, you can call it all of that, right? Because I've been manifesting, I've been doing things which to get more spiritual, to focus on spirituality, and I'm
like you said, I'm coming across people who are more in that space, right? And it's Yeah. heartening to hear that you do meditation every day, you do your breath work every day, which is very heartening to hear, to be candid. But just on closing thought, you've been writing books and you've been sharing your knowledge, right? And there are a lot of naysayers. Like you mentioned that in one WhatsApp group, people said, "Hey, you're talking against the religion," right? They use the word Yeah. kufr, right? So how do you deal with that, where you get retaliation, where you get people who come and say you're wrong? Yeah, it's a long journey. I mean, for my entire life, I've been like this, managing like वो जो 20 years थे ना वो basically इसीलिए थे because nobody believed me that I could write book, or nobody believed me that I have such wonderful thoughts which now people are appreciating, right? उस टाइम पे लोगों ने मुझे बड़ा बोला कि तुम ये क्या पागल हो, ये किस किस्म की बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये तो सही नहीं है. Even at every step when I wanted to take my career or my education, higher education in psychology, everybody used to say कि तुम ये कौन सी फील्ड को सिलेक्ट कर रही हो, ये तो पागलों की फील्ड होती है, इससे अच्छा इकोनॉमिक्स में चले जाओ, एमबीए कर लो, ठीक है. तो हर लेवल पे जो है ना, आई फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल. जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट की तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तुम इंग्लिश में क्यों लिखोगी, तुम्हारे पास ये नहीं है, आई मीन व्हाट नॉट. यू गेट टू हियर. एंड बीइंग अ फीमेल, ऑफ कोर्स लोग मुझे यही कहते थे कि तुम जो है ज्यादातर जो है ना अपना टाइम बच्चों को दो, मियाँ को दो, तो तुम्हारा घर चलेगा, ऐसे किन चीजों में पड़ गए हो. सो यू नो लाइक एट एवरी स्टेप you face a lot of resistance. But the thing is, again, I would just go back and say कि अगर आपने realize कर लिया your purpose ना, आपको वो पर्पस पुश करता है खुद ही उस टाइम पे. बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट बुक्स, आई वॉन्टेड टू शेयर नॉलेज, बिकॉज आई नो एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड आई रियलाइज कि ये जो कॉन्सेप्ट है, पीपल शुड नो दिस बिकॉज दैट्स हाउ दे गोना चेंज देयर लाइव्स. बिकॉज मैंने अपनी लाइफ चेंज इसी तरीके से की है. तो वो जो है वो पर्पस मुझे जो है ना वो कॉन्स्टेंटली वो करता है. एंड द वन थिंग आई वुड जस्ट गिव यू अ लिटिल एग्जांपल हियर. एक किसी ने स्टोरी शेयर की थी कि ठीक है ना, एक शायद टाइगर था, कोई जंगल की स्टोरी बच्चों की है, बट इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज. कि आई थिंक देयर वाज अ टाइगर एंड अ डोंकी, ठीक है ना, दे वर डिस्कसिंग एंड द डोंकी वाज सेइंग द ग्रास इज ब्लू एंड द टाइगर वाज सेइंग नो, ग्रास इज नॉट ब्लू, ग्रास इज ग्रीन. बड़ी उनकी जो है ना बहस हुई. eventually they went to lion and they said कि जो है donkey is saying the grass is blue. तो और जो लायन ने कहा, लायन ने पनिश जो है उसको कहा कि for 2 weeks you wouldn't say a thing क्योंकि donkey is right, grass is blue. टाइगर को बड़ा हुआ कि why saying. तो उसने कहा, लायन ने कहा कि देखो the first thing is कि you don't have to argue with fools, ठीक है ना, ये आप ही वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी अगर लेट्स से यू आर्ग्यू विद फूल्स. एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड योर पैशन, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, यू डोंट हैव टू, आई मीन, टेक थिंग्स पर्सनली, ठीक है ना. आई नो माई सेल्फ कि मैं क्या कह रही हूँ, आई नो, एंड बिलीव मी, वो मैं इतने अरसे तक बहुत सारी बातें लोगों से शेयर करती रही और मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता रहा. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑन लिंक्डइन, I got very good appreciation when I started writing blogs. मैंने जब लिखना start किया तो I got very good appreciation. तो you need to find right company, और जो wrong company के जो criticism होता है ना उसको आपने heart पे नहीं लेना होता है. But do listen to the criticism because अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो वो अपने perspective से कह रहे हैं and they can give you some advice to get better, ठीक है ना. One thing this very important कि आपने उनको क्रिटिसिज्म को जो है ना बिल्कुल नलिफाई नहीं कर देना कि नहीं भाई मैं तो सभी हूँ. यू डू टेक द एडवाइस बट डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट यू नो एज अ फीडबैक, ग्रूम योरसेल्फ, बी बेटर एंड देन मूव ऑन. या वो गधों की पर्सपेक्टिव्स को सुन के ऐसा लगता है कि वो गधे हैं तो उनको गधों को जैसा ट्रीट करिए. बिल्कुल बिल्कुल, यू कांट, आई मीन ठीक है मैंने अपनी वीडियो हटा दी, मैंने कहा ठीक है आई एम सो सॉरी दैट इफ इट हर्ट यू एंड दैट्स ओके. एंड अभी भी बहुत सारी जगहों पे मुझे होता है, देन आई डोंट शेयर my things with them. That's okay. Yeah. Yeah, No, that's on okay. on that thought, Ambreen, it's beautiful, and it's this lion story is amazing. I will try to use it also, right, with Sure. people who come across. But no, on that beautiful thought, this has been a very wonderful conversation. And I didn't know where I will go with this conversation, but I have gone to an amazing place. And I hope you've enjoyed it as well through this entire conversation.
Sure. It's an absolute pleasure. Thank you for taking time out today. Thank you so much for having me on your show and giving me an opportunity to share my thoughts, my knowledge with you and with your audience. Yeah. No, no, great. Thank you. And Thank you. hopefully we'll share this with everyone, and everybody reaches out to you, buys your book, and gets to know you more. Thank you. Thank you so much.